That's the sort of things. They had a great start to the tournament. The washout notwithstanding, they got 1 point from there and were phenomenal against India. Back 2 points from there, 2 points from Bangladesh, but then suffered a blip when it mattered the most against Pakistan and then against Netherlands. And courtesy that South Africa are out of the World Cup now. They've crashed out. They've not made their way to the semi-finals, something that was looking certainty. Hello and welcome to Bad Bricks and CricTracker present Runneeti. And this is how this game panned out. Now, Netherlands को न्योता दिया गया था पहले बल्लेबाजी करने का शानदार शुरुआत उन्हें मिली और इनफैक्ट 158 कुल उन्होंने बनाए लगातार कॉन्ट्रीब्यूशंस हर प्लेयर से कॉन्ट्रीब्यूशन आया अगर आप स्कोर कार्ड वापस भी देखें तो बासरे लीड के खिलाफ के अलावा हर बल्लेबाज ने रन्स बनाए और उसके जवाब में साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी खड़ी नहीं हो पाई और ये मुकाबला 13 रन से गंवा दिया साउथ अफ्रीका ने हबीब मतलब इतना कोई बड़ा मुश्किल टारगेट उनके सामने नहीं था ओपोनेंट को भी काफी काफी अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था बिल्डअप में अब अंडर एस्टिमेट शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि इन हाइंडसाइट हमने ऑलरेडी देख लिया है कि नेदरलैंड्स ने क्या किया काफी निराश होगी साउथ अफ्रीका की टीम इस तरह से कैंपेन समाप्त हुआ अगर आप अभी साउथ अफ्रीका को वो जो बोलते हैं ना चोकर्स बोलोगे तो वो लोग शायद माइंड नहीं करेंगे they should not mind now because it's clearly shown that when you play in a bigger stage, in World Cup stage, in crucial matches, they always, they always fail. Kind of. I mean, it was like this game was like supposed to be a easy game for them because Netherlands was struggling in this World Cup. They do play qualify, but they always struggle in batting, and they have had a good tournament. South Africa started very well. Yes, one game they lost in Pakistan. That can happen, but this game they should win it, and they were defeated. I mean, there's no contest actually. You see, when Netherlands batting, the batting has struggled throughout the tournament. Everyone looks like is contributing, scoring runs with good strike rate, and except Nortier, everyone gone for runs. Rabada, Ngidi, nobody. I mean, restrict them. So when they score 159, it's a good batting track. So it should not be a big score for South Africa. But starting, they fail also in batting. But they always look like they're always behind. I think South Africa was like one batsman short because the captain was totally out of form. So he plays with him with 5 batsmen. So basically, playing with 4 batsmen. So that's probably the one of the reason South Africa not to chase down this score. All right, then the attention would obviously be a lot more on the Dutch team today because of how they have fared and all the prayers of the Pakistani fans being rewarded there. At least for the first game, it did work in their favor. In the meanwhile, the player of the match is being declared. It's Colin Ackerman. And considering how the team had contributions from each of the batsmen, be it Stephen or after that, we saw that there was Max O'Dowd as well chipping in with a cameo. I mean, you had been mentioning how the batting didn't click throughout, but as far as South Africa were concerned, in their bowling also, we saw a bit of panic there. Here's this innings by Colin, 41 unbeaten, and a crucial one as well. Now, within the first 9 overs, they had deployed 6 bowlers. Eventually, of course, it was Aiden Markram who got them the breakthrough, but there were signs of panic there. It is. I mean, yeah. I mean, when we start, even from the first over, they look like panic when they Netherlands when they start attacking South African bowlers. They look like they didn't expect it, but that can happen. I mean, the other batsmen also came to score runs, and good thing about Netherlands, every batsman came. They came with
with a positive frame of mind. They just Hmm. want to score runs, and they're scoring with a good strike rate. And South Africa looked really surprised. And player like Rabada who played so many games in this every format, Lungen, they all are experienced players. I expect a little bit more from them. When Parlin started, and then again when he came back, he conceded few runs. Except Maharaja, nobody looked like in settled mind. Everyone looked like a little bit panic. Probably they didn't expect it. That's to counterattack them. Hmm. But you should expect when you play T20 format, you should expect other teams to go after you sometimes. I mentioned that I wouldn't be talking about South Africa anymore. I turned the attention to the Dutch, but such has been this game. I mean, the way in which South Africa's campaign came to a close, of course, one keeps thinking about how it all just blasted. But in the meanwhile, there's a piece of good news for the Indian fans. Because South Africa have lost this game, it means that they finish with 5 points. Now, जो अगला मुकाबला होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच, किसी एक टीम के पास 6 पॉइंट्स होंगे और 6 पॉइंट्स ऑलरेडी भारत के पास आ चुके हैं। इसका अर्थ यह है कि भारत ने सेमीफाइनल्स में जगह पक्की कर ली है। अब यहाँ पे जो खेल है वो इस बात का है कि टेबल को टॉप कौन करता है, क्योंकि अगर बांग्लादेश अगला मुकाबला जीतती है तो बहुत हाईली ये चांसेस है कि भारत अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबला गवाती भी है तो अगर 150 रन का गैप नहीं होता, उससे कम का होता है दोनों के बीच में, जो मार्जिन है उनके बीच में, तो भारतीय टीम टॉप पर रहेगी। अगर पाकिस्तान मुकाबला जीतती है और भारत जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबला गवा देती है तो पाकिस्तान की टीम टेबल टॉप करेगी। आई मीन अ far cry from how things were. We were talking about Pakistan's campaign coming to a close, and then Bangladesh as well, their hopes being poured cold water on by after their loss to India. और अभी समीकरण कुछ ऐसे बन रहे हैं कि दोनों में से कोई एक टीम सेमीफाइनल्स में जगह पक्की करेगी। और ऑफ कोर्स पूर्व बांग्लादेश के कप्तान इस बात को सुन के मुस्कुराएंगे और वाजिब भी है अभी। Definitely. Thanks to Netherlands that they gave us Bangladesh opportunity to actually they can qualify on safe hands. Before the tournament, if you ask anybody, can Bangladesh qualify with the semi-final? And the Bangladesh T20 form was not very good in that period of time. But now Bangladesh sitting in a stage where they can actually qualify the semi-finals. Two teams, Pakistan it seems like that World Cup campaign is finished. For Bangladesh, World Cup campaign is finished. The little calculation was there, but it was like not unreal. It was like unreal to have this kind of stuff. But nobody always thought that South Africa to lose to Netherlands and given these two team opportunity, golden opportunity actually, I would say. But definitely, I think it's a good opportunity for Bangladesh and definitely for Pakistan as well. Now there is no equation. I don't think anyone is thinking about getting topper in this point table. For every team, I think its first priority is to go to semi-finals. That's the most priority, top priority. So I don't think Pakistan or Bangladesh will mind to qualify for semi-final even this second. But yes, you want to be in semis. That's the things I think both teams is looking at. एक्चुअली दो सेट ऑफ फैंस लगातार डच टीम के लिए प्रे कर रहे थे, एक बांग्लादेश टीम के फैंस और एक पाकिस्तान टीम के फैंस। इनफैक्ट पाकिस्तान टीम के फैंस तो स्टेडियम में भी मौजूद थे, बहुत ज्यादा अटेंडेंस नहीं थी, लेकिन कुछ पाकिस्तानी सपोर्टर्स जो थे वो लगातार काफी वोकल थे अपने सपोर्ट में नेदरलैंड्स टीम के लिए और लगातार चैंट कर रहे थे, जीतेगा भाई जीतेगा, नेदरलैंड्स जीतेगा। हालांकि शब्दार्थ समझा होगा नेदरलैंड्स के प्लेयर ने, लेकिन भावार्थ समझ गए और रिस्पॉन्ड कर दिया और काफी स्ट्रॉन्ग दुआएं जो कि वो काम आई। जो हमने नेदरलैंड्स की बल्लेबाजी का जिक्र किया, कलेक्टिव एफर्ट था। इनफैक्ट स्टीफन भी, उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी की। टॉम कूपर का जिक्र करें, स्टीफन की पहले बल्लेबाजी अगर देखें तो स्क्वायर ऑफ द विकेट कितने स्ट्रॉन्ग थे। टॉम कूपर आते ही बड़े शॉट्स उन्होंने लगाने शुरू कर दिए, एक रिवर्स स्वीप भी देखने को मिला। तो नथिंग टू लूज वाले एटीट्यूड से जो मोटिवेशन आता है वो थोड़ा अलग ही होता है। थोड़ा अलग होते हैं शायद, definitely. I mean, starting from Bergman, I think he was the one who started. He was the one who gave the first punch, which South African bowler didn't expected. And then whoever come, Tom Cooper, Ackerman, everyone comes and scored runs and good strike rate. Yes, there's nothing to lose for the Dutch in this game.
But I think they shown their ability in this game that they can good enough to score runs against bigger opponent, good bowling side. It helped them definitely. Probably throughout the tournament they are little bit underperformed. So probably in this game they thought that yeah, I have nothing to lose. Let's show our best and go back home with one win, so that which we can always remember and go back home with a lot of confidence for the future. But yes, it does help them. But at the same time, I believe it's what we have shown today, that they has got the ability to score runs in T20 format, with a bigger opponent and good for bowling attacks. Mm. 4 points to their name at the moment. They also won against Zimbabwe. So, how eventually the table would shape up would also decide whether they get a direct qualification for the next T20I World Cup to be held in US or not. In the meanwhile, let's also talk about their fielding. हमें देखने को मिले वो कैचेस और इनफैक्ट डेविड मिलर को डिसमिस करने के लिए जो कैच लपका था इतना बड़ा विकेट था क्योंकि अगर इस साउथ अफ्रीकन टीम में कोई एक ऐसा प्लेयर था जिसने ऐसे प्रेशर सिचुएशन में लगातार टीम को बेल आउट किया हो वो डेविड मिलर थे और उनका विकेट इतना महत्वपूर्ण और एक शानदार कैच से उसे लपका ये टूर्नामेंट का बेस्ट कैचेस में एक होगा वो because he was running behind and he was he lost the ball, but he never keep his sight out of the out of sight of the ball. So he kept looking at the ball, and it was like the ball was going behind him, and he was like with the one hand he was off balance. It was just a fantastic catch, and it was probably sometimes maybe called match winning catch. This is the match winning catch because if Miller stays, then run rate would have been a problem. Miller can score runs 10 runs, 15 runs, not issue for David Miller. Probably South Africa team also expected that. I mean, they Yeah. first 10 over they didn't score enough runs. They thought that we have Miller and Klassen in the back, so they can come and score, but it didn't happen. So that probably to me the winning catch of the winning moment, that catch, because it was a difficult catch, and if Miller stays, South Yeah. Africa would have won this game. अभी भी ऐसा मुकाबला है कि इसकी चर्चा आने वाले लंबे समय तक चलेगी लेकिन आज हमें इसे सीमित करना होगा क्योंकि मैं भी समझ रही हूँ आप आतुर होंगे बांग्लादेश के चांसेस को एसेस करने के लिए अगला मुकाबला बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खेला जाना है उससे क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है ऑफ कोर्स उस पे हम प्रकाश यहाँ पर डालेंगे नाउ बांग्लादेश के केस में बहुत महत्वपूर्ण होगा इंडिविजुअल ब्रिलियंस हमने उनके तरफ से देखा है कलेक्टिवली टीम एफर्ट यहाँ पे देना बहुत जरूरी होगा अगर सेमीफाइनल्स में जगह पक्की करनी है तो सेमीफाइनल्स जाने के लिए आपको कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, वो तो पड़ेगा ही। देखिए, आप टूर्नामेंट में अच्छे खेल सकते हैं, लेकिन आपको सेमीफाइनल में आने के लिए कुछ करना पड़ेगा। हर वक्त आप लाख लेके सेमीफाइनल नहीं जाओगे। You have to perform and you have to do special, and team effort is definitely very important. I mean, Bangladesh has to win this tournament. Bangladesh has got some brilliant individual performance, but in this game, I believe Pakistan is a good side. Without a doubt, Pakistan is a very good side. They got a very good bowling attack. They got a good batting side also. So to beat them, Bangladesh has to play their best, and they needed a winning. I mean, team effort, combined effort, not one guy. They should not rely on one guy to win the game for them. There should be needed team combination and winning effort from everyone. And probably this is the day. I think Bangladesh will play with less pressure because everyone expected Pakistan to win, and Bangladesh, like what Dutch did today, they have nothing to lose. Let's go and play our best cricket. and somehow they don't believe in taking a lot of pressure on themselves because be it Shakib's statement that them defeating South Africa or India would be labeled as upset, or Shiram mentioning that because before this in T20I World Cups they've not fared really well, so them winning 2 games is a victory in itself. So considering these statements, probably Bangladesh have not believed in taking a lot of pressure on themselves. It almost worked against India, isn't it? Bangladesh almost crossed that hurdle, but then yeah, India is a better team and won the game. But yes, because Bangladesh doesn't have many consistent performer in T20 format, so they wanted to play without any pressure. And it is a fact that with the team and other stuff, India, Pakistan, they're ahead of Bangladesh. They're favorite of this. Even Pakistan favorite for today's game, but
It's T20. When Bangladesh plays India, if you match, India is always there. But every time Bangladesh plays India when World Cup stage and Asia Cup stage, they always give hard time to India. And in Pakistan too. Pakistan is better side, but Bangladesh, I think, inside in the mind, they believe that they can win the game. Yeah, they didn't show that they have pressure. They're telling the staff probably not to take pressure into themselves, but I'm pretty sure that they believe they can win the game. No, I do not remember what happened in 2007. If that's what you're trying to remind me, 50 overs World Cup, I remember nothing of that. But वापस मुकाबले पे आते हैं, जो ओपनिंग साझेदारी मिली पिछले मुकाबले में टीम को, और जिस तरह से लिटन दास ने टॉप ऑफ द ऑर्डर बल्लेबाजी की, बहुत लंबे समय से खोज चल रही है आइडियल ओपनिंग पेयर की। क्या फाइनली मिल गया है वो बांग्लादेश को? I hope so. But other openers really need to score runs. It's not only Liton Dash. Last game Liton Dash was scoring like 200 plus strike rate, and from other end it was like 100 less than 100 runs. So he is the only one who need to score runs. If there's a little bit more strike rate from other end, other batsmen probably get a bit easier. So uh, Liton Dash is, yes, he can do that job. We saw that, but need other open by his partner also took little bit pressure away from him, because I hope that if he scored us, Litanda doesn't have to take all the pressure to score us. Sometimes in past what happens, because from other hand run not coming up, so Litanda is taking the pressure to scoring us. And that by doing that sometimes he got out. So as a batsman, he is a free-flowing batsman, but sometimes he need support from other end too. Support from other end, so that he doesn't have that scoring pressure all the time. हुँ। अब थोड़ा ज़िक्र अगर पाकिस्तान का करें तो उनके मिडल ऑर्डर पे काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे थे वर्ल्ड कप में आने से पहले, और हमने देखा था कि किस तरह से एशिया कप में भी 1-2 अच्छी इनिंग्स देखने को मिली, बट ओवरऑल मिडल ऑर्डर अच्छा कंसिस्टेंटली परफ़ॉर्म नहीं कर रहा था लंबे समय से। लेकिन इस विश्व कप में जब ओपनर्स नहीं चले हैं, तो मिडल ऑर्डर ने ही स्टेप अप किया और बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। क्विकली योर थॉट्स ऑन दैट? If they got very well, yes, but they need to score runs from other end to Shadab. Yeah, they got a good score from Shadab, but he don't expect runs from Shadab every match. But I think still I believe that their best batting is like Babur and Rizwan. If they fail this middle order, they score few runs, but they're still not questionable a little bit. Hmm. There's no dearth of familiarity between the two teams. They've played each other plenty of times in the last couple of years as well. In fact, just before the World Cup, there was a tri series as well in which they featured. Now the records are overwhelmingly in favor of Pakistan. 17 is to 2 head to head T20 internationals, and that's how things stand as far as Pakistan Bangladesh clashes are concerned. Now, of course, in the tri series as well, there were two close matches, both of which Pakistan bagged. And all right, then there's an update from Adelaide. It's 8:30 a.m. here in Pakistan, and all right, the social media also has been a buzz with a lot of excitement, and particularly from Pakistan fans. And why not? Their team is in with a serious chance, one that they'd almost given up after that one-run loss to Zimbabwe. Now, let's have a look at what the social media has been talking about in our segment Social Tracker, brought to you by Bad Break 7. ऑलराइट देन, इफ्तिकार चाचा नॉट कमिंग स्लो। अच्छा, ये जो इफ्तिकार चाचा वाला कॉन्टेक्स्ट है, महज 32 इयर्स ओल्ड हैं इफ्तिकार अहमद, और फिर भी यंगेस्ट चाचा है, उनके लिए चाचा लगातार संबोधित किया जाता है। इसका संदर्भ आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है। सलमान मलिक ने कहा कि अगर वो रिप्लाई करेंगे तो उन्हें चाचू नहीं बुलाएंगे, ऑल्दो प्यार से बुलाते हैं चाचू, टर्म ऑफ एंडियरमेंट है। इफ्तिकार अहमद ने रिप्लाई किया और चुप रहने को कहा है। लेकिन ख़ैर, ये इफ्तिकार चाचा वाला जो जो बात है वो तो चर्चा आगे चलती ही रहेगी। लीडर एक ही था, ये पाकिस्तान के फैन्स यहाँ पे असर्ट कर रहे हैं, सरफराज को याद कर रहे हैं, हैशटैग कप्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक और बात यहाँ पे लगातार चल रही है, यहाँ पे मोहम्मद ज़ुबैर जो कह रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, बट आई नो वन थिंग व्हिच वी ऑल शुड एक्सेप्ट, दैट इन दिस वर्ल्ड कप
Netherlands, Zimbabwe, and Ireland played just wow cricket for which they should be appreciated. And indeed, they get so limited opportunities, but when they did get this platform, they made the most out of it and ensured that they did get noticed with their exploits. तो सोशल मीडिया सराह रहा है उनके प्रदर्शन को, इन टीमों के प्रदर्शन को जिन्होंने अपसेट्स क्रिएट किया और इस टूर्नामेंट को और भी एक्साइटिंग बनाया। इस बीच क्विकली एक अपडेट देना चाहूंगी, टॉस बांग्लादेश ने जीत लिया है, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। और एक और अपडेट हमारी प्रोड्यूसर हम तक पहुंचा रही हैं कि 8:30 बजे सुबह है पाकिस्तान में और भारत में 9:12 हो रहे हैं। और लाहौर के स्ट्रीट में नेदरलैंड्स जिंदाबाद, जो हम स्टैंड्स में देख रहे थे नेदरलैंड्स जिंदाबाद, वैसा ही कुछ नजारा अभी लाहौर की सड़कों पर भी नजर आ रहा है और बहुत जोर से चैंट्स अभी चल रहे हैं। कुछ देर चलेंगे, उसके बाद पाकिस्तान का मुकाबला शुरू हो जाएगा, तो वापस ऑफ कोर्स पाकिस्तान की टीम को चेयर करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की टीम को इतने एनर्जेटिकली चेयर करने का मौका जो दिया है वो नेदरलैंड्स ने ही दिया है। अब वापस पाकिस्तान के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जो हम असेस कर रहे थे उस पर आते हैं। शाहीन अफरीदी का पिछले मुकाबले में छाप छोड़ना कितना महत्वपूर्ण था, क्योंकि इनफैक्ट शुरुआती 2 ओवर में तो महज 2 रन उन्होंने दिए और 2 विकेट भी निकाले। उनका पेनिट्रेटिव होना कितना महत्वपूर्ण पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से? हारिस भी है, बट वो बांग्लादेश को तो पहला जो बैट्समैन है लिटन, वो इज द बेस्ट बैट्समैन एट दिस मोमेंट। सो वो पाकिस्तान शायद उसको विकेट लेना चाहेंगे और वो लेने के लिए शाहिन शाह अफरीदी प्रॉब्लम बेस्ट पॉसिबल बॉलर। बट लिटन के लिए पेस इशू नहीं है, वो पेस पसंद करते हैं, वो ही लाइक पेस एंड फास्ट बॉलर कम विद गुड pace not issue for him, it's the sweep. If what we saw in this World Cup, Shaheen Shafii he's someone who can bring the ball in, but his pace is a little bit down. So for Little Dash, if he can, see 2-3 balls of Shaheen Shafii, he'll be fine because, as I mentioned, pace is not the issue. It's a sweep. If he can handle that, shouldn't be a problem for Little, but definitely. Shaheen Shafii, they're looking to get the first 2 wickets from Bangladesh because he's the one, who is the threat for Pakistan in these matches. इनफैक्ट वो भारत के खिलाफ भी जो मुकाबला था, शानदार प्लेसमेंट लिटन दास का देखने को मिला, उनके खिलाफ चांसेस नहीं क्रिएट हो रहे थे। वो जो ड्रॉप हुआ था दिनेश कार्तिक के सामने और स्लिप और विकेट कीपर के बीच में गया, उन 2 चांसेस को हटा दे तो अदरवाइज चांस फ्री इनिंग्स उनके तरफ से देखने को आई। पाकिस्तान की टीम अपने सेम 11 को बैक कर रही है, जिस 11 ने अभी तक उन्हें 4 पॉइंट्स दिलाए हैं, पिछले मुकाबले में 2 पॉइंट्स जिसने दिलाए। बांग्लादेश ने काफी चेंजेस किए हैं, शरीफुल, यासिर और हसन बाहर हैं, सौम्य सरकार, नासुम अहमद और इबादत हुसैन उनकी जगह ले रहे हैं 11 में। तो काफी सारे चेंजेस करती हुई बांग्लादेश की टीम इस अहम मुकाबले से पहले। और ऑफ कोर्स गेंदबाजी का दारोमदार बहुत हद तक तस्किन अहमद पर वापस से रहने वाला है, क्योंकि लगातार जिस तरह से इंजरी और सेटबैक्स को बैटल करते हुए उन्होंने वापसी की और टीम के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। भारत के खिलाफ भी अर्ली ऑन अपने जो लैटरल मूवमेंट उन्होंने जनरेट किया, उससे परेशान किया बल्लेबाजों को। Bangladesh playing with extra spinner today. Nasum Ahmed, the left arm spinner. So what we have saw in first game, ball is there's a little bit slowness in the wicket and it's turning a little bit. So that's probably right choice for Bangladesh. And Taskin Ahmed, yeah, I mean in this tournament probably he's the star of the tournament for Bangladesh. So each and every game he bowled with good pace and his line and length was just fantastic. He's a wicket-taking option for Bangladesh. Yes, I hope he stay injury-free because it was the issue for him in past, which we lost 1 or 2 years from his career. But he's fit now. He's eager to perform, and he's actually one of the peak of the bowler in this tournament. आपने स्पिनर्स का जिक्र किया, अब दोनों ही टीम के एक स्पिनर के बारे में बात करना बनता है। सबसे पहले शादाब खान। लेग स्पिनर्स जनरली कंसिस्टेंट नहीं होते, बहुत मुश्किल है इस आर्ट को परफेक्ट करना, बहुत मुश्किल है इस आर्ट के साथ कंसिस्टेंसी दिखाना। लेकिन शादाब खान के केस में पिछले मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका जो ओवर था निर्णायक साबित हुआ इवेंचुअली, बिकॉज उसके बाद बारिश के कारण मैच बाधित हुआ, उसके बाद जो टारगेट था वो रिवाइज हुआ, उसमें उनका 2 विकेट निकालना अहम था। उससे पहले के मुकाबले में उन्होंने आते ही विकेट चटकाया था, तो उनकी भूमिका को बतौर गेंदबाज कैसे देखते हैं आप?
उसका उसका जो मिड लेवल जो बॉलिंग करते हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. आई मीन ही ऑलवेज गुड, नॉट ही नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड रन but he's get wickets. And in the, when other teams looking for scoring runs, when they face some good fast bowlers and thinking that spinner come and they score runs, then Shadab Khan came and took the wicket. Yes, he's probably the one of the most important for Pakistan bowling attack, because he has got the variety, and he hardly bowls bad balls. Usually leg spinner often bowl long hops, but if you see Shadab Khan bowling, he hardly bowls bad ball. He always good, bowls in good area, and his googly is always very effective. So he's someone Bangladesh batsmen need to look at, because if you go after him, usually he gets wickets. So it will be I hope Bangladesh team planning for him, and not to give him wicket, but he can always score runs against him 7 8 runs. But if you look at scoring 10+ runs against Shadab, you might get into trouble, because he's someone is difficult to get away. हम्म। और अब क्योंकि बांग्लादेश के स्पिनर का भी जिक्र करते हैं यहाँ पे, शाकिब अल हसन कप्तान, हमने देखा है कि इस टूर्नामेंट में या फिर पिछले कुछ वक्त से वो जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, जितने इम्पैक्टफुल वो बतौर ऑलराउंडर माने जाते हैं, वैसा कुछ देखने को नहीं मिला है। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा ही अच्छा प्रदर्शन किया है। उनका एवरेज बल्लेबाजी में 45 का रहा है, और गेंदबाजी में भी पाकिस्तान के खिलाफ अच्छे रिवॉर्ड्स उन्होंने रीप किए हैं। तो आज के मुकाबले में बिल्कुल स्टेप अप करना चाहेंगे कप्तान और टीम को, ही वुड लाइक टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। टीम को चाहिए आज. उसके साथ साकिब को बेस्ट चाहिए. Look, Sakib ko jo bhi form in is World Cup ke, you cannot write him off, because he's the या kind of player he always perform in right time with the big opponents in important matches. I think today Sakib probably I'm expecting to do his best today, because what I have seen from Sakib, that he always perform in under pressure. His best या perform games are always under pressure. So definitely he will be important player for Bangladesh today, because Bangladesh is bowling second. So whatever Bangladesh score, so in the middle overs, Nasum and Saqib will be very crucial to win the game. In fact, even with his fielding, he made that difference in the game against Zimbabwe with his direct hit Exactly. to send back Sean Williams. Let's have a look at the playing 11 of both the teams before we sign off. How the two teams have stacked up in this game. Pakistan, Mohammad Rizwan and Babar Azam. हालांकि इस टूर्नामेंट में 20 से ज्यादा की साझेदारी, हाईएस्ट साझेदारी इनफैक्ट 16 की रही है, तो 20 का आंकड़ा भी ये पार्टनरशिप नहीं क्रॉस कर पाई है। मोहम्मद हारिस पिछले मुकाबले में आए थे, एक ब्रीजी कैमियो खेला था। शान मसूद भारत के खिलाफ अर्धशतक जड़ा था। इफ्तिकार अहमद लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इनफैक्ट 2 मुकाबलों में अर्धशतक जड़ा है इस विश्व कप में। मोहम्मद नवाज शादाब खान पिछले मुकाबले में टूर्नामेंट का सेकंड फास्टेस्ट अर्धशतक जड़ा। मोहम्मद वसीम, नसीम शाह, हारिस रौफ और शाहीन अफरीदी। बांग्लादेश के लिए शांतो, सौम्या सरकार इस मुकाबले के लिए वापस आए हैं। लिटन दास, शाकिबुल हसन, अफीफ हुसैन, नुरुल हसन हालांकि पिछले मुकाबले में भारत के खिलाफ एक अच्छा कैमियो खेला, मैच को अलाइव रखा लंबे टाइम तक, लेकिन अदरवाइज टूर्नामेंट में स्ट्रगल किया है और विकेट कीपिंग भी कुछ खास नहीं रही है अभी तक। मुसद्दक हुसैन, तस्किन अहमद, नसूम अहमद, इबादत हुसैन और मुस्तफिजुर रहमान। अब इसके साथ चलते हैं कॉन्टेस्ट की तरफ, जो कॉन्टेस्ट हम लगातार रन कर रहे हैं क्रिक ट्रैकर पे। कॉन्टेस्ट बहुत आसान है, इसके जो नियम है वो बहुत आसान है, हालांकि सवाल थोड़ा ट्रिकी है। आपको प्रिडिक्ट करना है टॉप रन स्कोरर पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुकाबले में, कौन आपको लगता है सबसे ज्यादा रन बनाएगा। और दूसरा स्टेप ये है कि आपको हैशटैग बैड ब्रिक 7 का इस्तेमाल करते हुए इसका जवाब देना है। आपके पास 8 मिनट है, 8 मिनट में आप निर्णय कर लीजिए और पोस्ट कीजिए कौन आपको लगता है इस मुकाबले में सबसे ज्यादा रन बनाएगा। आपकी मदद हबीब करेंगे। हबीब बताइए आपकी क्या प्रिडिक्शन है, आपको क्या लगता है इस मुकाबले में कौन सबसे ज्यादा रन बनाएगा। Little Kumantash. Alright, मेरे मेरे ख्याल से वो फॉर्म में है. लास्ट मैच पे इन वर्ल्ड कप ही वाज मिसिंग आउट लिटिल बिट. He got the start but he didn't get a chance to score big runs, but after last game he'll be confident. And when Little Dash played his best cricket, he usually scored big runs, so I'm hoping Little Dash will score the most run of this match today. and he's indeed pleasure to watch when he gets going. Those shots are so attractive, so crafty.
इसके साथ हम पोल भी रन कर रहे हैं, इस मुकाबले के लिए भी कर रहे हैं, पिछले मुकाबले के लिए भी किया था। इस मुकाबले में सबसे जो 2 पॉइंट्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं, वो कौन निकालेगा? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में हल्का-सा पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। हालाँकि नॉट मच टू सेपरेट द 2 टीम्स बिकॉज़ नेदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका का मुकाबला देखने के बाद प्रोबब्ली पोल में वोट किया है और देखा है कि कैसे अपसेट, कोट अनकोट अपसेट हो सकता है इस विश्व कप में। तो ऐसे ही मुकाबले की उम्मीद करते हैं, यहाँ पे जो 19-20 का फ़र्क है, वैसा ही कुछ 19-20 वाला एक्साइटिंग मुकाबला हो जाए, तो फिर बात ही क्या है। तो अभी के लिए हम साइन ऑफ करेंगे। थैंक यू सो मच हबीब। वापस आएँगे इस मुकाबले के समापन के बाद और तब बिल्डअप करेंगे भारत और ज़िम्बाब्वे के मुकाबले के बीच के लिए भी। तो अभी जुड़ने के लिए धन्यवाद। Hopefully, I'll come back with a big smile. Mm, we hope that. I told you, Bangla Tigers, I'm cheering for them in this game. Thank you.